So today we are starting with an important topic that is called as scalp. Prior starting scalp, we should know few basic definitions. जैसे temple. Temple is that region of head which are present on the lateral side. यहाँ पे these two are called as temple. This is called as temple. Injury and infections, they are most common in these regions. Now what is scalp? हम जब स्कल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था स्कल कैप, जिसको हम बोल रहे थे कैलवेरिया. ओके, सो टिश्यू विच इज कवरिंग दोस कैलवेरिया, दैट इज कॉल्ड एज स्कैल्प. अब हम डायग्राम में देख के समझते हैं. सो दिस इज द एंटीरियर पोर्शन, दिस इज द पोस्टीरियर पोर्शन. एंटीरियरली दीज आर ऑर्बिट्स, यहाँ पे ऑर्बिट होता है. सो वी हैव सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स, और उन सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं सुपरसीलियरी आर्चेस. सो एंटीरियरली स्कैल्प जो है कहाँ से शुरू होता है, दैट इज सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स, यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स. पोस्टीरियरली इट इज अटैच्ड ऑन एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड दीज superior nuchal lines and these superior nuchal lines. तो ये scalp का हुआ anterior extension, posterior extension, and now lateral extension. Lateral extension पे it is present till zygomatic arch and external acoustic meatus. पर कुछ books में हम इसको बोलते हैं laterally it is present till superior temporal line. यहाँ पे present रहती हैं superior and inferior temporal line. So कुछ authors, कुछ books हमको बोलती हैं that it is present till superior temporal line. So anteriorly हमने extent देख लिया, कहाँ तक extent होता है, superior orbital margin. Posteriorly external occipital protuberance and superior nuchal line. Sides में हमने कहाँ पे देखा, zygomatic arch and external acoustic meatus. And we have also read this important point that in some books it is given that laterally it is present till superior temporal line. Both are correct. You can follow whichever book you are following. So this diagram we have already I have already explained this diagram, and I hope the extent of scalp is clear to you all. So this is a very important slide. This is telling you that this scalp, this is made up of tissue which is covering the scalp, which is covering the skull. First is extent. Anteriorly कहाँ तक आ रहा है, supraorbital margin. Posteriorly external occipital protuberance, superior nuchal line, and laterally it can be superior temporal line or zygomatic arch. Now layers. Scalp is having 5 layers. Scalp is having 5 layers. और उसका mnemonic जो रहता है याद करने का, वो scalp खुद है. S is for skin. C is for cutaneous connective tissue, subcutaneous connective tissue. A is for aponeurosis, that is epicranial aponeurosis. L is for loose areolar connective tissue, and P is for pericranium. So these are the 5 layers of scalp. So these 5 layers of scalp, you have to remember this by a mnemonic which is called as scalp, which is called as scalp. Superficial fascia को ही हम synonymically बोलते हैं सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, और डीप फेशिया को ही हम बोलते हैं एपीक्रेनियल एपोन्यूरोसिस. तो ये 5 लेयर्स अच्छे से याद होनी चाहिए. अब हम इन 5 लेयर्स को डायग्राम में देखते हैं, और ये डायग्राम भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम. दिस यू हैव टू प्रिपेयर. फर्स्ट लेयर, दिस इज स्किन. द आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज स्किन. सेकेंड वॉज कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम बोल रहे थे सुपरफिशियल फेशिया और सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू. सो दिस सेकेंड लेयर, दिस इज connective tissue. Third one, from A, it was aponeurotic layer, that is epicranial aponeurotic layer. So third is aponeurotic layer. This fourth one, this is loose areolar tissue. This is loose areolar tissue. And last ये bone है, skull bone. skull bone के ऊपर जो हमको layer दिख रही है, this is pericranium.
So these are the 5 layers of scalp. These are the 5 layers of scalp, and everybody should know how to draw this diagram. This layer of scalps, आपको पांचों layer याद रहनी चाहिए और ये diagram भी आपको prepare करना है. Now we are moving individually to different layers. ये same diagram उन लोगों ने एक बार फिर से दिखाया है. This is skin. This one is skin. Below that we have connective tissue. Then this green color, this is aponeurotic layer. Below that we have loose areolar tissue, and below that we have pericranium. These are diploid bones of the skull, and you can see that below that we are having these veins, emissary veins. Okay, these are emissary veins. Now 5 layers of a scalp. First one is skin. First one is skin. We have very well seen that this layer, this is having hair. You can see these hair on the outermost layer. These are hair, and this skin layer, this is attached to aponeurotic layer. This is very well attached to this third layer, aponeurotic layer, with the help of this connective tissue. So this skin layer is adherent. बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से ये चिपकी हुई है किससे? aponeurotic layer से. And we have seen that it is having hair follicles. Along with that hair follicles के साथ और क्या रहता है? Numerous sebaceous glands and sweat glands. So skin peculiar features, these are the peculiar features that this layer is having. This is hairy, and this is adherent to epicranial aponeurosis with the help of connective tissue, and it is having numerous hair follicles. Hair follicles के साथ हमें पता है क्या रहता है? Sweat glands and sebaceous gland. So this was about the first layer, that is skin. अब similarly हम second layer पे जा रहे हैं. So that is subcutaneous connective tissue. और क्या बोलते हैं हम इसको? और हम बोलते हैं superficial fascia. और क्या बोलते हैं हम इसको? superficial fascia. ये किससे adherent है? This is what is present in this layer. नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें dense connective tissue present है. क्या प्रेजेंट है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू. और ये किसका पैसेज अलाउ करती है? ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. ये हम डायग्राम में देख लेते हैं. दिस इज द सेकेंड लेयर. दिस इज द सेकेंड लेयर. ओके, दिस वन इज द सेकेंड लेयर. दिस इज द सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू. और यहाँ पे आपको ये ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं. यू कैन सी दीज blood vessels. You can see these blood vessels. And also आप इसमें देख सकते हो कि ये स्किन को इसने कैसे adherent करके रखा है aponeurotic layer से. Then third layer. Third layer is epicranial aponeurosis. इसको हम और एक synonym जो word रहता है उसको हम बोलते हैं Galea aponeurotica. This is also called as Galea aponeurotica. And anteriorly and posteriorly ये एक मसल को origin देती है, attachment देती है, जिसको हम बोलते हैं occipitofrontalis muscle, which is called as occipitofrontalis muscle. These 3 layers of the scalp, they are called as surgical layer. They are called as surgical layer or scalp proper, or they are also called as scalp proper. Now fourth layer. Fourth layer is made up of loose areolar tissue. This is made up of loose areolar tissue. Anteriorly इसका attachment किसी bone पे नहीं होता. ये interesting बात होती है. This is attached directly onto the skin of upper lid. ये हमें बात याद रखनी है कि this is anteriorly, this is not attached onto any bone. In fact, this is attached onto a skin. और कहाँ की स्किन? दैट इज अपर आईलिड. पोस्टीरियरली कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है? पोस्टीरियरली ये एक्सटेंड कर रही है सुपीरियर न्यूकल लाइंस. एंड दिस लेयर, दिस इज गिविंग अ पैसेज टू emissary veins. This is giving a passage to emissary veins. Then pericranium. Pericranium कौन सी लेयर है? जो बोन्स हैं उसके जस्ट आउटर